हाँ, ये remove it off. Yes, yes, yes. So I was about how often should we solve GTs, right? Now when it comes to your 120 days, you have to solve at least 12 to 15 GTs. Now when you solve GTs, what do I mean by it? देखो, अगर किसी शख्स ने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो थक गया, सो गया, उसने रिव्यू ही नहीं किया कि क्या मिस्टेक थे, कौन से सब्जेक्ट में मिस्टेक थे, विच कंसेप्ट्स वर रॉन्ग, देन इट इज यूजलेस. यू वेस्टेड टाइम. When I tell you solve GTs, what do I mean by it? I mean you solve it, you see which subjects are you making mistake. Subjects may be which concepts are you making mistakes in. For example, suppose you will get less marks in biochemistry. You see that the question which you have done wrong belongs to which chapter. Suppose it is chapter of protein metabolism. उसमें भी you see which concepts. Suppose if it is serotonin metabolism, go back, read that concept first. So this is how each GT will improve your score. बात समझे? So this you should do for all wrong questions. जितने wrong हुए उतने तुमने ये करना है. Even people used to call me mad when I used to solve this many GTs. Because I will tell you the approach. When we started, see most of them, जितने भी लोग होते हैं ना, सब इंटर्नशिप में जागते हैं कि अब हमें नीट के लिए पढ़ना है. ओके, नॉट बिफोर दैट दे यूज्ड टू स्लीप. सो वंस दे वेक अप, दे स्टार्ट रीडिंग सब्जेक्ट्स जो मैंने थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में फिनिश किया था. सो आई स्टार्टेड डायरेक्टली सॉल्विंग जीटीज इन माई इंटर्नशिप. तो व्हेन माई फ्रेंड्स केम टू नो कि दिस गाय इज जस्ट सॉल्विंग जीटीज, they said Sultan is going mad. But what I used to do is, I used to solve 300 questions of 1 GT and I used to review each of these questions. तो at a time कितने टॉपिक हो रहे हैं? 300 टॉपिक्स हो रहे हैं. 300 मिनिमम टॉपिक्स. सो चाहे कोई भी इंसान कितना भी पढ़ ले दिन में, he cannot go more than this. You got it? So that is how you have to be very vigilant. You have to be very smart in your approach. Okay? Now with every GTs you have to act like a मारवाड़ी. समझा क्या? कि पहला GT दिया, उसमें कितने करेक्ट आए? सपोज 100 करेक्ट आए, 400 मार्क मिले, 400 मार्क्स. ओके, देखो कौन से सब्जेक्ट गलत है, देखो कौन से टॉपिक्स गलत है, गो बैक टू दो सब्जेक्ट्स, रीड देम, गिव अ नेक्स्ट GT. अब नेक्स्ट GT में प्रॉफिट होना चाहिए. समझा? So next GT में if previously 100 were right, now you should get at least 105. समझा ना? अगर नहीं आ रहे तो फिर से देखो कि कौन से सब्जेक्ट गलत आ रहे हैं. And you should repeat this cycle. And if you go on repeating this cycle, I tell you that nothing can beat you. It is going to help you 101%. Because I had screenshots of my all GTs which I had solved. It started with hardly 500 marks out of 1200. And I went on increasing and जब मैं एग्जाम से पहले GTs देता था, it went to around 1000 to 1100 marks. So I used to be very happy when the score used to cross 1000. So that is what your aim should be when you are solving any GTs. बात समझ में आ गई है? So I hope that these practical points are getting very clear with all of you, right? Now when it comes to other important subject which is obstetrics and gynecology. Now if you see any examination paper of NEET, you would surely get at least 20 questions from OBGY. 20 questions आना ही आना है. 20 questions from OBGY. They are must questions. Especially the HSGs, that is hysterosalpingography images. Okay? So again, when you start doing obstetrics, what are the image-based possible questions from obstetrics? There are only 3 or 4 mainly image-based possible questions. One is on cardiotocography, CTG, the graphs, right? Second is the hysterosalpingography images. So what am I doing? I am leaking the paper, honestly. You got it? So this is how you can predict कि इसमें image पे पूछने लायक इतना ही है, तो यही आने वाला है पेपर में. You got it? So if you see all those previous years paper, you would see these are the important questions which are asked from OBGY.
ओके रेस्ट तो तुम्हें पता ही है, प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया इंपॉर्टेंट है, LSCS इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस इंपॉर्टेंट है. सो ऑल दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी डन. बिशॉप स्कोर इंपॉर्टेंट, बराबर. चेंजेस ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू OBGY. नाउ कमिंग टू long subjects. So short subjects, I hope that whatever important points were there I have covered. Okay, हालांकि बोलने लायक बहुत कुछ है, but these are important things which you need to remember. Now when it comes to long subjects, medicine, surgery and other long subjects, so medicine is one mega subject. Mega. ये जैसे आप शुरू करोगे ना, आपको प्रॉब्लम ये आएगा, ये खत्म ही नहीं होगा. This will be the problem with you. So you just start it and it doesn't end. And once if अगर तुम लोग ने पहले मेडिसिन स्टार्ट किया होता 2 महीने तक मेडिसिन ही पढ़ते रहते. ये जिसने ऐसे रॉन्ग अप्रोच लिया होगा ना, he would understand this कि if you start with medicine 2 महीना तो तुम्हारा मेडिसिन में ही जाएगा, एंड फिर जब तक शॉर्ट पे आओगे वो मेडिसिन पूरा उड़ जाएगा. राइट. सो आई टेल यू सम टेक्निक्स विच आई यूज. ओके, व्हेन आई स्टार्ट मेजर सब्जेक्ट्स I don't take one subject at a time. I start with 2 subjects at a time. So for example, सुबह में I would be reading the subject which irritates me. Okay? सुबह का टाइम अच्छा टाइम है. So उस टाइम में वो subject पढ़ो which will irritate you. Okay? Because that is the time when your brain would be grasping more. So you can read surgery which is difficult for you. And जब आफ्टरनून का टाइम है, when you might be a bit sleepy after lunch, in this case what you do is you start reading the subject which is less irritating, थोड़ा soothing subject. Now कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग में हमने पढ़ाई की,